How many students join? Sujit, Very good afternoon, sir. very good afternoon. Students, how many students join? 11. 11. Okay. So we have to wait a little bit. Already we have completed 3 classes, huh? And Yes, sir. blocks also. Huh? Each block consists of 4 units. It means 12 units we have completed, and only last block today we are going to discuss. So I hope you will enjoy and understand the things. Try to read the materials again and again and complete it properly and prepare for the examination. That is very important. Many students not came. I am discussing about last class. I have told you. You are listening. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So last class I have talked about one self-concept scale. Uh, I'll tell you a little bit about it. For that, I just sharing the slides now for your information. Uh, today's slide. Uh, okay. So are you listening? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Uh, the self-concept scale. The scale is here named. Uh, uh, Last class we discussed self-concept scale. It was developed by Dr. Mukta Rani Rastogi. Mukta Rani Rastogi. There is a manual also, and there is a scale also. The concept of self is probably the most distinctive and indispensable concept in psychology of personality. And the self-concept scale consists of divided by 3 major components. One is the perceptual, another is conceptual, and another is attitudinal component. Perceptual means which is physical self-concept, which includes the image of one's appearance, attractiveness, sex appropriateness of body, and the importance of different parts of the body. So that is perceptual. And another is conceptual component, which is similar to psychological self-concept, which relates to the origin of the individual, his abilities, disabilities, and his social adjustment and traits of personality. So second component is conceptual component, that is called psychological concept. And third one, attitudinal component. It refers to attitudes of a person about his present status and future prospects, his feelings about his worthiness, his attitudes of self-esteem, pride, and shame. It includes his beliefs, conviction, values. So there are total 51 questions, I think, depending on the based on the health, sex, appropriateness, abilities, self-confidence, self-acceptance, worthiness, present, past, future, beliefs, conviction, feelings of shame and guilt, sociability, emotional. So like that, different small dimension also. On the basis of this dimension, your self-concept will be measured. Okay. It was developed by Dr. Mukta Rani Rastogi. If possible, I'll send you. Okay, I'll send you the scale by WhatsApp. Through WhatsApp, I'll send you for your information. It is total question 51 questions. Only you have to agree. This is a 5-point scale. Like strongly agree, undecided, disagree, strongly disagree. So like that, points are there. Only you have to yes or no करना है. कुछ नहीं है. Very simple. So I'll send you later. Okay.
Okay, sir. Okay. So how many students joined now? Please check. Sujit, how Sir, many? 19, sir. Sir, 19, sir. You can start now. 19, sir. 19. We need to wait or we'll start. No, sir, start. Oh, you Start, can sir. start. Okay. Because they'll come one by one. Huh? They Okay, should sir. join in time. Huh? Anyway. So today's topic is finally early adulthood, middle adulthood, and old age. Ah, anybody can tell what is early adulthood and what is middle adulthood and old age? Can you explain little bit? Maybe a very simple question. Anybody can share? Early adulthood means which age group the person will be coming. Sir, 20 to 30. 20 to 40, not 30, 40, Okay, up to okay, 40. sir. And as per the materials given, second one is middle adulthood. Middle adulthood, it continues from 40 to 60 years. 60 or 65, you can say. Finally, old age. Old age is 65 and above. That is the old age and late adulthood. So there are three: early adulthood, middle adulthood, and old age. In old age, we actually in 4 units will discuss about what are the physical changes and cognitive changes, and as well as psychosocial changes and challenges. Challenges or issues in early adulthood, middle adulthood, and old age. We'll discuss today's class. So first of all, what is early adulthood? This is the slide. So it is the stage of our life between the ages of about 20 to 40 years and who are typically vibrant, active, healthy, and are focused on friendship, romance, child bearing, and career. 20 साल से 40 साल तक के अंदर का आदमी जो उनका थिंकिंग प्रोसेस है, उनका जो मतलब जनरली क्या करते हैं, किसका शादी हो जाता है, अच्छा फ्रेंडशिप रहता है, उसमें रोमांटिक भी रहते हैं. हाँ, जो भी एडल्ट है दोनों में खुद मैरिज, गुड मैरिज के बाद उनका अच्छा रिलेशनशिप रहता है. जिसका नहीं रहता है बस ठीक है. कुछ लोगों के साथ बच्चे भी है, चाइल्ड बियरिंग करते हैं. एंड ऑल्सो दे आर ऑप्टिंग फॉर गुड कैरियर. भविष्य में और क्या अच्छा, जो असिस्टेंट मैनेजर है वो मैनेजर करने के लिए. आप लोग कितना लोग है कंपनी में काम कर रहे हैं आपके? among you, how many are working in company? Yes, sir, I'm working. Working in company, which company? Coal India Limited. I'm working as assistant manager HR and IR in Coal India Limited. Okay, very good. Any other? Girls, mainly girls. Anybody share? Anybody can share? All are company or government job? I am in government job, sir. Government job. Okay. Anyway, so early childhood is our stage of our life between age 20 to 40 years of age group, who are typically vibrant, active, and healthy, are focused on friendship, romance, child bearing, and career. Secondly, it is the first stage of adulthood. It is the first old beginning. उनका कैरियर बन रहा है, मैरिज नया नया शादी हुआ है, किसके साथ बच्चे भी है. So in which the body physically changes and is one of the hardest time in our lives after teenage year. Teenager ये जितना अर्ली adulthood, मिडिल adulthood और लेट adulthood है, सब में एक ट्रांजिशन पीरियड है. आप टीनेज ईयर से मतलब adolescence you are transformed to early adulthood. So definitely you have a change and physical changes also occur as per your age group. So it is the first stage of adulthood in which the body physically changes and is one of the hardest time in our lives after teenage year. Okay, so this is about early adulthood. Second one, no physical changes. What physical changes occur in early adulthood?
In this stage, a person may continue to add a bit of height and weight to her teenage frame. The body continues to undergo significant hormonal changes, major changes. These changes may make beards grow a bit thicker and the voice to become slightly deeper and richer. Generally ଆମର କଣ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇମରେ ଦାଢି ଫାଡି ଉଠି ଯାଇଥାଏ, ନୂଆ ନୂଆ ଦାଢି ଉଠିଥାଏ, ନିଶ ଉଠିଥାଏ, ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଇକି ପୁଅ ଯଦି ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଝିଅ ମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ they are looking beautiful. So this is the period in which women usually have children, so it is the time in which women gain a little weight and finish their full physical development. Full in women के साथ भी physical development होता है, men के साथ भी होता है. Anyway, next physical changes. Next slide. Next is middle adulthood. In middle adulthood is characterized by competence, maturity, responsibility, and stability. Competency. They are very competent people. Middle age means from 40 to 60 years. It means the period is aged between 40 to 60 years or 65 years. You are matured, you are experienced, maybe 10-15 years experience you have. Suppose 25 years में आप नौकरी किए, आपका 15 years experience हो गया. एक्सपीरियंस होगा. जब 40 years होगा, आपको 15 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ है. The may continue to a bit of height and weight to her teenage frame. फिजिकली भी आपका थोड़ा ये भी होता है, चेहरा बन जाता है. The body continues to undergo significant hormonal changes. Second one, in middlehood, an important challenge is to develop a genuine concern for the welfare of the future generation. Future generation के लिए भी आप कोशिश करते हैं. So this is the time when one wants to enjoy the success of a job satisfaction derived from the family and social life also. So you need to, there is a balance between social life as well as your job life, workplace and your family. So you need to balance it. So midlife is also viewed as a period of creativity and significant contribution to society. The best works of scientists, writers, and also artists are produced during the late 40s and early 50s. So middle age is viewed as a very creative age and significant contribution to society. And the best work like scientists, writers, artists are produced during late 40s and 50s. This is about middle adulthood. Next is physical changes in middle childhood. So in all middle-aged people notice sign of deterioration in some aspects of their physical function. Maybe some people have physical deterioration, sign of deterioration also happens. Individuals also vary in their rate of physical changes. Which changes occur, all middle-aged people has sign of deterioration in some aspects of physical function. In 40s, there is usually a decline in near vision condition known as presbyopia. Eye problem भी हो जाता है. Middle adulthood is the second stage of adulthood in which one of the most noticeable changes is loss of elasticity in the skin, especially in the face. Hair starts graying, skin is wrinkling, and teeth are yellowing. Men in abdominal region, while women gain weight in the hips and thighs. Strength and flexibility in both gender also decrease. Not increase, decrease. Reading glasses or bifocal may be required to the first time. This time, the lens of the eyes become less elastic and losses its ability to accommodate. Middle adulthood is the second stage of adulthood. In which one of the most noticeable changes is loss of elasticity in the skin, especially in the face. For women, menopause occurs between the ages of 45 and 50. Menopause also occurs.
Men usually gain weight in the abdominal region, while women gain weight in hips and thighs. Strength and flexibility in both genders decrease, not increase, decrease. So this is about middle ages, so far as physical changes are concerned. Next is old age. Late adulthood. Late adulthood or old age is the period of life in every individual that follows the period of his life after he or she turns 65 years of old. 65 years old, nowadays in every job you see the age limit 65 years. 60 in Odisha government, 60 I think, in central government 65. I'm correct, Sujit? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 65 is the age for central government employees. Maybe doctors, it is applicable to doctors and other officials. But for Odisha government people, it State is government is 60. 60 years. Old age consists of ages nearing or surpassing the average lifespan of human beings, and thus the end of the life cycle. Old age is the end of the, because whatever you जो आपको करना था वो कर लिए, जिंदगी आपका मतलब the rest, taking rest ये period हो गया. Old people have limited regenerative ability. फिर आपका regenerative ability कितना है, क्या खाना खा रहे, क्या कर रहे, it depends of your diet control and exercise, your ability, bodily physical ability, and are you, because in that stage we see most of the people are prone to disease, syndrome or sickness than other adults. थकान है, गांव में देखेंगे तो आदमी पूरा बूढ़ा जैसे लग रहा है, बहुत लग रहा है, मगर जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है कि और कोई जॉब में है, एंगेजमेंट है जिसके साथ, they are looking good because they know those are educated people also, they have ability to क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे खाना है, क्या करना है, डायबिटीज प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम है, किसको कैंसर हो गया, किसको और हार्ट प्रॉब्लम हो गया. आजकल एवरीबॉडी इज thinking about these things because of corona also many people are affected. So this period is marked by the process of growing old, resulting in part from the failure of the body cells to function normally or produce new body cells to replace those that are dead. Old age, it means the period is marked by the process of growing old, resulting in part from the failure of body cell to function normally, and it consists of old age consists of ages nearing and surpassing the average lifespan of human beings, and thus the end of the human cycle. People can be considered old because of certain changes in their activities also and social roles. आप जितना काम कर रहे, जो ओल्ड आदमी है 65 60 का है, वो कितना काम कर रहे हैं, कितना एंगेजमेंट है, क्या कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन हिज डे टू डे रूटीन लाइफ. रूटीन कितना मेंटेन करते हैं, खाना क्या खाते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन करते हैं कि नहीं, उसका ऊपर डिपेंड करता है. अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू. नेक्स्ट, फिजिकल चेंजेस in old age. As an individual moves towards their old age, there are changes which occurs naturally and not due to any disease. Not due to any disease. The physical changes that occur in the bodies of the individual can be divided into two main categories: external changes and internal changes. The skin becomes less elastic, more wrinkled, lining आ जाएगा. ये आपका जो ये है फेस, अपर पार्ट ऑफ द फेस, लाइनिंग सब आ जाएगा, ड्राई हो जाएगा, स्किन सब ड्राई, thin. The wrinkles are formed partly because of loss of fatty tissue under the skin. The functional age is the actual competence and performance a person display regardless of chronological age. Functional age means आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है. Chronological age is your actual age. जो एज में आप है अभी 65 है तो 65 है. फंक्शनल एज क्या है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर ऑलवेज healthy, feeling healthy and exercises and working, maybe कुछ religious activity कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, so you'll be healthy. Otherwise
there are different problems. So far as your vision is concerned, taste, smell, touch, changes in bone, muscles, teeth, mouth, digestion, हर तरह का चीज में प्रॉब्लम होगा. इवन सेंसरी चेंजेस, सुना नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा. हाँ, यू हैव प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम. So difficult stage. Next, old age physical. So this is about first one. First one completed. First, okay. First unit completed. Any question or anything? Hello. No, sir. No, sir. Okay. Very good. No, sir. So next is cognitive changes: early adulthood, middle age, old age. We are talking about cognitive changes, or intellectual development, or how your brain is working and what you can do. First of all, we'll discuss about the early adulthood. Young adulthood is a time when most of us finish school and find a career. We enjoy and create a family of our own. Physically, it is a time where we are our healthiest and well reached out of peak performance. ये एज में आप देखेंगे कोई भी आदमी है अर्ली एडल्टहुड 20 to 40 के अंदर, लुकिंग वेरी यंग, वेरी हैंडसम और वेरी ब्यूटीफुल एंड अच्छा काम कर रहे हैं. हाँ, एनर्जेटिक, हाँ, पूरा शक्तिमान है, सबको सारे काम कर लेते हैं इन टाइम, बिफोर टाइम भी कर लेते कुछ लोग, वेरी एक्सपर्टाइज है उनका. कॉग्निटिवली, सोशली, इमोशनली, हर तरीका में यू आर फिट. फिजिकली, so you are the cream age maybe, so far as working is concerned. As a young man, husband, wife, maybe one child or two children, घूमना फिरना, बैठना, काम करना, so everywhere you are good, and your diet also be good in this time. Staying in a good place maybe. If you have no proper fooding or proper health condition और ये सब नहीं है, तब there is problem. Otherwise you are good. So here one thing I am telling you, you go through the slide. Cognitively, it is a time to grow up and make life decision. Life decision आप लेते हैं 20 साल से 40 साल के अंदर. You have to decide कौन सा लाइन में जाना है. Maybe you have so many options. You have to decide and finalize क्या करना है, क्या नहीं करना है, शादी करना है कि नहीं, मैरिज, या और क्या करना है, कि सिंगल रहना है. So you have to decide in this stage. Socio-emotionally, it is a time to take on roles of independent. You are independent. बहुत लोग ऐसे होते हैं नौकरी करने के बाद, पापा मम्मी है गांव में, आप जाके बेंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, कोई और कहाँ है. सो ऐसे काफी लोगों का लाइफस्टाइल हो जाता है मैरिज के बाद, चेंज हो जाता है लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल चेंज है, मैरिज कर लेते हैं, फिर फैमिली बना देते हैं. हाँ, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपना चिंता करते हैं, कोई चिंता नहीं है, वो अपना चिंता में रहते हैं. सो आज पर I'm telling you, Erickson, one psychologist, Erickson, there are 8 stages. There are 8 stages of psychosocial development. So, whereas Erickson is concerned, a psychologist, he talked about 8 stages of just reading. There are 8 stages. What are the 8 stages? First one is trust versus mistrust. Birth to 1.5 years or 2 years, you can say. Here, what is the outcome? Feelings of trust from environmental support. And negative outcome क्या है? Fear and concern regarding others. Second one, autonomy and shame and doubt. Autonomy versus shame and doubt. 1.5 years to 3 साल तक. Self sufficiency. If exploration is encouraged, explore करता है आदमी, autonomous होता है. Doubts about self. Lack of independence. Next is initiative versus guilt. 3 साल से 6 साल तक. Discovery of ways to initiate actions. Guilt from action and thoughts. Next is industry. Industrious versus industry means hardworking. Industry versus inferiority. अगर आप अच्छा काम कर रहे तो you are good. आप नहीं कर रहे तो you feel inferior. 6 साल. Development of a sense of competence, feelings of inferiority, no sense of mastery. Next आ गया identity and role confusion. ये adolescent stage आ गया. Last class we discussed awareness of uniqueness, self.
uniqueness आता है, independence, knowledge of role to be followed. If it is not there, inability to identify appropriate roles in there. And today, as early adulthood, intimacy versus isolation. So far as psychosocial development of Erikson, this is important. Intimacy versus isolation. It is coming under early adulthood, 20 to 40. Development of loving sexual relationship and close friendship. So आप शादी फादी कर लिए, अच्छा relationship है, husband wife, close friendship भी है. So this is the requirement of this intimacy. अगर intimacy नहीं है, fear of relationship with others और कुछ कर रहे हैं, तो it will be difficult. So what is written? Intimacy versus isolation. During college, people move into intimacy versus isolation, spanning the period of early adulthood from around age 18 to 30, in which the focus is on the developing close relationship with others. Difficulties during this stage result in feelings of loneliness, अकेलापन आ जाता है, isolation, and fear of relationship with others. While successful resolution of the crisis of this stage results in the possibility of forming relationships that are intimate on a physical, intellectual, and emotional level. So that is the, according to Erikson, a period during adulthood that focuses on developing close relationship. It means intimate relationship. If it is not there, so isolation will be there. So that is the psychosocial development. This is about early adulthood. Understood? Yes, sir. Okay. Yes, Next, sir. Yes, sir. Next. सर Hello. अर्ली एडल्ट ये कितने एज कितने कौन सा? अंदर ये रहता है? अर्ली एडल्ट जो है Early एज से adult, कितने है 20 सर? to 40 years. 20 to 40. Okay. Early adulthood. 20 to 30. 20 to Okay. 40 years. Okay. Understood? Sir. Okay. Okay, Next sir. is cognitive changes during early adulthood. What are the cognitive changes means? What are the intellectual development? The cognitive stages during early adulthood can be discussed as a period of realistic and pragmatic thinking. You know what is realistic? What is pragmatic thinking? Anybody? Any idea? Pragmatic thinking means making decisions. You can write also, note down. Pragmatic thinking, talking about making decision based on available evidence. Based on available evidence. Evidence मतलब मान लीजिए आप बोल रहे हैं आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है. So your need is ice cream. So you can take and tell about ice cream. That is okay. तो जो एविडेंस है जिसका बारे में आप बोल रहे जो करने वाले हैं, then you are clear. Otherwise, realistic. Next is realistic thinking. Realistic thinking is talking about looking at all aspects of a situation, the positive, the negative, and the neutral. All aspects. All aspects. We are practically we are doing realistic thinking. जो करने वाले हैं, ये करना है मुझे. Already we have decided. Realistic. हमें एग्जाम देना है. That is your decision. Realistic thinking. Looking at all aspects of it. All aspects मतलब घर का कुछ समस्या है, आपका ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, और कुछ है. Besides that also you making a conclusion. Realistic thinking. Pragmatic मतलब आपको जो अवेलेबल है उसका ऊपर डिसीजन आप लेने वाले हैं, लिए नहीं, लेने वाले हैं, सोच रहे आप. Decision based on available evidence. Some experts argue that the idealism of Piaget, formal operational stage, decline in young adulthood, replaced by more realistic and pragmatic thinking. इसका मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कौन सा एज में होता है? कौन बताएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम व्हिच एज? कौन बताएगा? सुजीत, एनी आइडिया? ना भूल गए? Adolescence. Adolescence means 11 years. After 11 years it Yeah, starts. 11 years it starts formal year. Formal operational stage 11 year to up to adolescent up to 19-20. You can say. But here
we are talking about early adulthood. It continues from 20 to 40. मतलब 20 above 20, it is not required. You are thinking about realistic and pragmatic thinking. Your thinking Sir, process. formal operational stage is over, sir. Formal operational stage over, declines in young adulthood. Therefore, it is written replaced by more realistic. क्योंकि आप दुनिया के बारे में आपका जानकारी हो गया ना, ये करना है, ऐसे करना है, यहाँ जाना है, ऐसे करना. सो यू डिसाइडेड, मेक योर ओन डिसीजन. आपको कोई जरूरत नहीं है दूसरा का ये लेने का. आप यू आर मतलब you self thinking, you are enough to decide what to do, what not to do. क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो भी है, you can decide better. Okay. Yes, sir. Middle adulthood. Next is middle adulthood. Middle adulthood is the period of age. Middle adulthood is the period of age beyond young adulthood, but before the onset of old age. Middle adulthood, which year? Anybody can tell? 40 to 60 years of life. Generally, this period is aged between 40 to 60 years of age. You can tell 60 to 65 also, maximum, because our retirement age nowadays in central government job 65 years. Odisha government 60 years. No, पहले क्या था? 58 years था. Middle age is the period of age beyond young adulthood, but before the onset of old age. 65 के बाद पूरा old हो गया. अभी 60 years नहीं, 65 हो गया old age का age. In middle adulthood, an important challenge is to develop a genuine concern for the welfare of the future generation and to contribute to the world through family and work. So your responsibility now is to develop some students, develop some newcomers middle adulthood में. आप already experienced हो गए. आपका पीछे जो फ्यूचर जनरेशन आ रहे हैं उसको आप गाइड कर सकते हैं, उसका आइडिया दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू फैमिली एंड वर्क. मिडिल एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्पिटेंस, मैच्योरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी आल्सो. वेरी स्टेबल एज, बैलेंस्ड एज मिडिल एज. क्योंकि ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस हो गया हर चीज में. 40 to 60 years मीन्स इन जनरली ऑलरेडी ये हो गया. जैसे क्रिकेट में 40 years मतलब बहुत हो गया, बूढ़ा हो गया वो. मतलब ये नहीं कर पाएगा वो, उसको एंट्री नहीं मिलेगा क्रिकेट में. फुटबॉल, क्रिकेट मैक्सिमम उनका एज है 35 तक चलता है. 35 अब ओल्ड हो गए वो. सो मिडिल एज स्टार्टेड फ्रॉम 40 to 60 years, इट कंटिन्यूज, और 65 मैक्सिमम. This is the time when one wants to enjoy the success of job satisfaction derived from the family and social life. यहाँ आपका बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है मिडिल एज में. क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी? यू हैव चिल्ड्रेन पढ़ रहे हैं स्कूल में, कोई स्कूल में जा रहा है, कोई मे बी कॉलेज में पढ़ रहा है, +2 पढ़ रहा है. तो यू हैव सो मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट. उनको कैसे आप डेवलप करेंगे? पीपल लुक फॉरवर्ड टू द सक्सेस ऑफ देयर चिल्ड्रेन. Middle ages adults show visible sign of aging such as loss of skin. Physical हम जाएंगे, अभी गए नहीं उस पे, ये सब भी आ जाता है. So in middle adulthood, an important challenge is to develop a genuine concern for the welfare of the future generation and contribute to the world through family and work. This period is aged between 40 to 60 years, or you can say 65 years maximum. Okay, understood? Next. Yes, sir. Yes, sir. Cognitive changes during middle adulthood. What are the cognitive changes? Middle adulthood is the period in which an individual changes in their cognitive functioning as concerned to their intelligence. Little bit spelling mistake is there, their intelligence. One is crystallize, another is fluid intelligence. Crystallize, another is fluid. क्रिस्टलाइज ये है कि मान लीजिए कल्चर में आप पढ़ रहे हैं, कोई कल्चर मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्चर है जहां आप रह रहे, मतलब आंध्र प्रदेश में आप है, यू आर टेकिंग द कल्चर ऑफ आंध्र प्रदेश.
10 साल 20 साल 25 साल रहे हैं कि और कोई जगह पे आप रह रहे, गोवा में रह रहे हैं, मतलब उसका कल्चर आपका आ गया, तो दैट इज क्रिस्टलाइज्ड। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इंटेलिजेंस, ये दीज आर टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ, कॉग्निटिव फंक्शनिंग आज कंसर्न टू देयर इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज एंड अनदर इज फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड मतलब मिडिल एज में क्या होता है, फ्लूइड इंटेलिजेंस है, अच्छा है। फ्लूइड जो क्रिएट किया जाता है, मान लीजिए आपका एनालिटिकल स्किल है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो चीज आप कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग आपका हाथ में, फ्लूइड इंटेलिजेंस है, रहता है, मिडिल चाइल्डहुड में रहेगा, ओल्ड एज में वो कम हो जाएगा फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज हर टाइम रहेगा, मगर फ्लूइड इंटेलिजेंस आज पर द एज योर मेमोरी कम हो जाएगा, आप इतने डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं कर पाएंगे, कोई भी एनालिटिकल थिंग तो सोच नहीं पाएंगे। तो दैट इज अबाउट क्रिस्टलाइज एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। It is the period in which sir, one question, sir. Yes. Sir, crystallized intelligence day, culture is plays an important role. Crystallized intelligence actually refers to our ability to use knowledge, experience, vocabulary and verbal memory. ये सब में है उसके अंदर, but it is related to particular culture or particular society. That knowledge is intelligence is like that. To use knowledge, experience and vocabulary and verbal memory जो भी है is related to one culture में. And fluid intelligence is talking about your creative. Fluid in our ability to see relationship, use abstract reasoning, analyze information, नया नया चीज जो सीख रहे हैं वो फ्लूइड इंटेलिजेंस है। सो फॉर सर वो हर एज के लिए एप्लीकेबल है फ्लूइड इंटेलिजेंस? हाँ, एवरीबॉडी। You have now in this stage you have fluid intelligence. Fluid intelligence मतलब you can analyze information, you have a good maybe relationship ideas, you better develop reasoning, abstract thinking. हाँ, ये सब कर सकते हैं आप। आपका तो अभी ब्रेन पूरा मैच्योर्ड ब्रेन है, अर्ली एडल्टहुड। आप कितना एज ग्रुप है, एज कितना है मैडम आपकी? 31। 31। यू आर यंग मीन्स पूरा अच्छे से कर सकते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस इज मोर, you can decide, you can analyze a thing better, abstract thinking, analyze information, ये सब आ जाता है आपके अंदर। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस गुड। ओल्ड एज होता है तो वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। क्रिस्टलाइज में क्या हो, जो नॉलेज एक्सपीरियंस है वो इट रिलेटेड टू ये पर्टिकुलर कल्चर, पर्टिकुलर सोसाइटी और पर्टिकुलर ये, बट देयर आर आल्सो नॉलेज, एक्सपीरियंस, वोकाबुलरी, वर्बल। मान लीजिए आप 10 साल रह के अफ्रीका में आए एक्सपीरियंस से 10 years, so you know the culture, you know the standards of the people and how they are thinking। कोई भी चीज है, कोई पर्टिकुलर प्लेस का बारे में आपका आइडिया होता है। क्रिस्टल मतलब पर्टिकुलर एरिया में आपका नॉलेज है, refers to our ability to use knowledge, experience, vocabulary and verbal memory. And fluid intelligence declines with age, but crystallized intelligence continues to grow as we learn more. Crystallized continues to grow as we learn more during middle ages. क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बढ़ता है, वो बोल रहा है बहुत है। कोई कल्चर है, मान लीजिए हम बहुत जगन्नाथ प्रेमी है, जगन्नाथ जी के बारे में, पूरी का कल्चर में हम पूरा ज्यादा ये है, हमें बार बार वो चीज पढ़ के हमें नॉलेज बढ़ जाता है हमारा। That is about Sir, crystallized experience based on the experience. Experience, So our what we ability gained? knowledge, ability to use knowledge, vocabulary and verbal memory also। ठीक है। Information processing, memory, expertise, career, work, leisure, religion, health, coping, meaning in life, बहुत कुछ है, everything। But fluid is like जैसे सर हम बंगाल से उड़ीसा आए हैं, तो ये उड़ीसा का कल्चर, भाषा, उन लोग मतलब यहाँ के जो लोकल सब कुछ है जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये मेरा क्रिस्टलाइज एक्सपीरियंस है। आपको उड़ीसा से कितना दिन से है? 2 साल हो गए सर। हाँ, 2 साल है, धीरे धीरे। हाँ, क्रिस्टलाइज तो रहता है ना, वो जाता नहीं कहाँ वो डेवलप होता है, जिंदगी भर रहेगा। वो बोल रहा है कि
इट कंटिन्यूज अप टू योर ओल्ड एज। बट फ्लूइड जो है वो ग्रेजुअली एज के बाद खत्म हो जाता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस इतना नहीं रहता है, क्योंकि आप ओल्ड एज जब हो जाता है, ये तो मिडिल एडल्टहुड का बारे में बोल रहे हैं, जब लेट एडल्ट 65-66 होगा, आप इतना याद नहीं रहेगा, कोई एनालिटिकल चीज, वो डिसीजन मेकिंग, घर बनाएंगे, इसे प्लान है, ये है, आपका बेटा बोल रहा है, बेटी बोल रहा है, मान लीजिए, तो यू कैनॉट डिसाइड। बट क्रिस्टलाइज जो है वो तो होता रहता है, उसमें बंद नहीं है, वो सीखते रहते हैं आप, लर्निंग रहता है, वो बढ़ता है। बोल रहा है ना, फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्लाइन्स विथ एज बट क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कंटिन्यूज टू ग्रो as we learn more during middle age। जितना पढ़ेंगे उतना याद रखेंगे। हाँ, जिसका बारे में आप पढ़ेंगे, जो करेंगे, होता रहेगा, वो क्रिस्टलाइज बढ़ता रहेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? हेलो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। हाँ, मल्टी डायरेक्शनल मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया में कॉग्निटिव नॉलेज बढ़ता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है हर एरिया में, जो एरिया में आप इंटरेस्ट लेते हैं तो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, ओल्ड एज। Late adulthood or old age is generally considered to begin at about 65 years. So 65 years is the age. We can say somebody is old. Erickson suggests senior citizen हम 60 years में हो जाते हैं, मगर नहीं, as per our Indian ये 60 years is the old age। हाँ, 60 years में आपका क्या होता है? Senior citizen. You will be a senior citizen. But as per central government or as in India, 65 years old age, 65 years. Erickson suggests that at this time it is important to find meaning and satisfaction in life rather than to become bitter and disillusioned. Satisfaction in life rather than become bitter and disillusioned. That is to resolve the conflict of integrity versus despair. Integrity versus despair का मतलब क्या है? कौन बताएगा? Erickson. This is the stage of integrity versus despair. Ego integrity versus despair, late adulthood, sense of unity in life's accomplishment, regret over lost opportunities of life. The last stage of psychosocial development is the ego integrity versus despair stage. Comprises late adulthood and continue until death. Success in resolving the difficulties presented by this stage of life is signified by sense of accomplishment. Difficulties result in regret over what might have been achieved but was not. According to Erickson, a period from late adulthood until death, during which we review life's accomplishment and failures. What is accomplishment? Anybody can tell? इसको आता है क्या? Achieving something, sir. Something good. Your achievement. Yes, accomplishment. And failures भी होता है, ये नहीं कि हर आदमी के साथ। Despair का मतलब क्या है? Despair. हेट ऐसे कुछ काम किए जो कि आपका दुनिया का भर का लोग आपको अलग एंगल में देखते हैं। कोई क्रिमिनल है, कोई डकैत है, और कुछ है, कुछ ऐसे भूल काम किया है। Negative characteristics. Yes. Negative characteristics. नेगेटिव पीपल, 2000 बहुत बुरा काम किए, किसको मारे है, क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई भी माओवादी जो भी है, तो सम रॉन्ग थिंग्स दे हैव डन, बहुत लोगों को मार दिए, बच्चे को मार दिए, जो भी किए, तो देयर despair. Sense of unity in life's accomplishment, ego integrity मतलब, and if negative outcome, regret over lost opportunity of life. So this is the final stage or psychosocial development. उसका पहले जो stage था, you know that about that, before that middle age में आता है वो. Development continues during middle adulthood as people enter the generativity versus stagnation stage. Generativity means refers to a person's contribution to his family, to community, work, society as a whole. जो पर्सन कंट्रीब्यूट करता है फैमिली के लिए और दूसरा काम के लिए, that is
generativity as a whole. Success in this stage results in positive feelings about the continuity of life, while difficulties lead to feelings of triviality regarding one's activity and a sense of stagnation of having done nothing for upcoming. In fact, if a person has not successfully resolved the identity crisis of adolescence, he or she may still be identifying an appropriate career is concerned. तो stagnation का मतलब क्या है? What is stagnation? Anybody can tell? According to Remain as such. क्या? Tell it again, please. Remain without any change. Stagnation. You are stop means stop. According to Erickson, a period in middle adulthood during which we take stock of our contribution to family and society, that is regenerativity. Contribution किए और जो नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, that is a stagnation stage. मतलब कुछ नहीं कर रहा है, nothing he is doing. So that will come in middle adulthood, and ego integrity versus despair in late adulthood. Okay, understood? Next, cognitive changes in the old age. Cognitive development is a general loss cognitively as people move closer to the end of life. Researchers believe that age-related decrease in working memory is a crucial factor underlying poorer. Working memory क्या है? Short-term memory. Our short-term memory is our working memory. Yes. Short-term memory, which lasts from 15 seconds to 25 seconds. बहुत कम. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप स्टेशन जा रहे, कोई फ्रेंड मिल गया आपका, थोड़ी देर बात की, वो निकल गया, आप गए थे कुछ दूसरा पर्पस में, तो फिर आके घर में जब आप बात कर रहे हैं आपका फैमिली के साथ, तो यू फॉरगेट द नेम. क्या नाम था, भूल गया मैंने. इट मीन्स it only lasts for maybe 1 minute or 2 minutes. Immediately you come to your house. Suppose जाए स्टेशन पास में आपका घर है, immediately you came, but you forget. That is, it lasts for a few minutes or few seconds. That is short term memory. But short term memory चलता रहता है दिन भर. That is working memory. It's very crucial for underlying poorer. Retirement at 65 years age is the conventional choice for many people. उसके बाद और काम करना मुश्किल होता है, नहीं, ये बात तो है. उसके बाद काम करना इजी है क्या? वेरी डिफिकल्ट. 65 years का बाद कोई काम करना डिफिकल्ट टास्क. कैनॉट वर्क अप टू 65 also difficult. No. नेक्स्ट आ गया आपका, ये खत्म हो गया cognitive changes. Any doubt or anything? Hello? No, sir. Okay, next. Psychosocial changes in early adulthood, middle age and old age. What is psychosocial? Psychosocial का मतलब क्या है? Anybody can tell? Sir, the combination of a psychological and sociology. क्या आता है उसमें? We are talking about which aspects of life of a person? डे टू डे लाइफ में जो उसका बिहेवियर है, एटीट्यूड है, जो भी काम करता है, जो भी चेंजेस होता है, दैट इज योर बिहेवियर, कैपेबिलिटी, जो भी है. यू कैन थिंक डिफरेंटली, कॉग्निटिवली, फिजिकली एंड सोशली, इमोशनली, ऑल टाइप्स ऑफ साइकोसोशियल. साइको मीन्स माई सेल्फ, निजी, I. Sir, teacher is a psychosocial, is the best example of a teacher is you can say psychosocial means आप क्या सोच रहे हैं और you compared with society or social relationship.
That is psychosocial. Every day we are confronted with different psychosocial things. Everybody, घर में आप बैठे हैं, कुछ सोच रहे, इसका बारे में कुछ बोल रहे, कुछ you are in a particular thinking process. उसका ये वो आदमी ऐसा था, ये था, वो था, आपका अपना इंटरप्रिटेशन आप दे रहे हैं. घर में आपका मदर है, फादर है, वो लोग saying like that. So it is a discussion, social, psychosocial. Your own feelings and others' feelings also. Your own feelings and other people's thinking. Thinking may be your feelings, maybe or anything, memory, anything. All the psychological process, psychosocial. आप क्या चिंता कर रहे हैं, कैसे बैठे, क्या कर रहे हैं, क्या करना है आपको आगे, एवरीथिंग. अर्ली एडल्टहुड में माइंड क्या आता है, यू आर वेरी यंग, you are just entering into the job, so new job will be interesting, and still different challenges how to face, because somebody is there, your director or your coordinator or any designation manager in the office is also observing what you are doing, how you are doing, what is your achievement, what is your knowledge level, how much you can do, in what way you are going, how much you are knowledgeable, जो भी है, तो आपका बारे में वो आइडिया ले लेता है. 1 महीना 2 महीना करने के बाद काम, उसको कंप्यूटर में आपका कितना नॉलेज है, मैथमेटिक्स में कितना नॉलेज है, आपका सोशल रिलेशनशिप में कितना है, रैपो किसे अच्छा बनाते हैं कि नहीं, यार ए गुड लिसनर और गुड टॉकेटिव मैन, जो भी है. सो एवरीथिंग, ऑल आर स्किल्स नाउ डेज. यू आर गुड स्पीकर, everything is required. So okay, psychosocial. Under psychosocial changes, first of all, development during adult year. क्या क्या development होना चाहिए, होता है. The capabilities and behavior of the individual continue to change as they grow older. Capability, आप जितना नौकरी कर रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, कैपेबिलिटी बढ़ जाता है, नॉलेज, स्किल, all types of skills also increase when you are growing old, not only because of biological growth process, but also because of their understanding and the way they interact with their environment. In Indian tradition, the period of adulthood is referred to as grahastha ashram. Grahastha, gruha, घर का काम कर रहे हैं. You have a family at your home, and also you have a responsibility in the office. Work life balance, you have to maintain work life balance. Grahastha ashram. During the stage, an individual enters the social life, accept responsibilities of family, marriage, entering into one career. Career also आप development कर रहे हैं, family को चला रहे हैं, marriage किए हैं, you have responsibility. So everything with you, you have to accept it and you have to maintain it properly. Therefore, you can say you are a good man or good husband, जो भी है. Middle adulthood is best known for midlife crisis. Crisis बहुत है middle life में, होता है. The midlife crisis results in divorcing. Divorce हो जाता है, शादी करते 2 साल में एटीट्यूड नहीं मिल रहा है, बात नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, झगड़ा हुआ दोनों में, फिर हस्बैंड वाइफ डिवोर्स कर ली. चेंजिंग जॉब ऑल्सो, if the work is not interesting, manager is not good person, आपका रैपो ठीक एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, काम जो है, you are not comfortable with the work, moving from city to suburb, दूसरा जगह जा रहे हैं आप, तो ये होता रहता है. This is about development during adult year. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Psychosocial changes during early adulthood. What are the psychosocial changes? Early adulthood is the stage of our life between 20 to 40 years. 20 to 40 years old, who are typically vibrant, active, healthy, and are focused on friendship, romance, childbearing, and careers. So early adulthood, the person is
with 20 to 40 years of old who are very vibrant meaning energetic, एक्टिव है, हेल्दी है, फोकस्ड है, गुड फ्रेंडशिप बना देता है, रोमांस भी होता है, चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी भी है, बच्चे के साथ भी टाइम बिताते हैं, कैरियर को भी देख रहा है, कैरियर डेवलपमेंट भी हो रहा है। सो हर चीज में योर साइको सोशल रिलेशनशिप अच्छा है, मैनेजर का साथ भी अच्छा पड़ता है, काम कर लेते हैं जो काम करना पड़ता है। रात मान लीजिए लेट हो रहा है, आजकल जॉब में लोगों को 8 बजे आना पड़ता है रात को, सुबह जाएंगे 9 बजे कि 8 बजे, फिर रात को 12 घंटा ड्यूटी। नहीं, आप लोगों का कितना ड्यूटी पड़ता है जो कंपनी में काम कर रहे हैं? हाउ मेनी आवर्स यू हैव टू वर्क? हेलो, 6 hours. हाँ, 6 आवर ओनली? Yes, sir. होला, Yes, sir. कंपनी ऑल्सो 6 आवर? नहीं सर, मैं कॉलेज में काम करती हूँ। 6 आवर कॉलेज। 6 hours. हाँ, IIERS. और अदर कंपनी में, कंपनी 8 to 10 hours, sir. 8 to 10 आवर। हाँ, कुछ जगह पे 12 आवर्स भी होता है नया जॉब में, नहीं 12 घंटा भी काम करना पड़ता है, सुबह जाएंगे फिर रात को आएंगे। और जो ऑनलाइन काम होता है तो वो रात भर चलता रहता है, बंद नहीं होता है, थोड़ा सा करो काम करो फिर जाके रात को आओ फिर करो, तो इट इज कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर पीरियड। So it is the first stage of adulthood in which the body physically changes. Body physically changes and is one of the hardest time in our life after teenage years. फिजिकली चेंजेस भी होता है, आप मोटे हो गए, दुबला पतला हुए, जो भी है, हाँ, फिजिकल चेंजेस भी होता है। हार्ड टाइम भी बिताना पड़ता है क्योंकि ऑफिस को कितना टाइम देंगे, फिर आपका वाइफ के साथ कितना टाइम देंगे, घूमना है, पार्टी जाना है, पार्क जाना है, आज और कुछ होटल में खाना खाना है, जो भी है। सो your number of engagement, whole day, so you are enjoying your activity, then it is okay. If you are not enjoying, it is difficult for you. So during this time in one's life, people find themselves with a new sense of independence. Independent हो जाता है आदमी, हाँ, पापा मम्मी को गांव में छोड़ दी कि वो अलग रहते हैं, आजकल ऐसे होता है, आप लोग शादी करके अलग से रहे, हाँ, बिकॉज यू नीड इंडिपेंडेंस। आपको घूमना है, फिरना है, ये करना है, कुछ काम करना है अलग से, ओवर टाइम काम कोई करता है, टाइम नहीं मिलता है, खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है, घर में होटल में खाना पड़ता है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर अमंग द पीपल आल्सो। According to Erickson, the socialization process consists of 8 stages. That's 8 stages again comes. Erickson. Socialization का मतलब क्या है? Anybody can tell? To be socialized. To be socialized. Any example? Be a good man. Be a good man. Not good man, bad man. It is a question. And Interacting with each other in the society. Huh? Again, please repeat. Interacting with each other. Interacting with them. sir, the Scientific. positive Involved in behavior daily accepted. social activities to act the as positive- the codes and ethics of society. Hmm. As per the codes and ethics of society. Sir, the positive behavior should be accepted by the society. कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में, वो अलग होकर रहते हैं, आइसोलेटेड होके, उनका अच्छा लगता है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी। आपका एटीट्यूड पर्सनालिटी जैसा है आप ऐसे ही करेंगे। आपको ज्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता है, आप अकेले में रहना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को मिलना जुलना, इमीडिएट आएंगे तो ऑफिस से दूसरा आदमी के पास गए, दूसरा फ्रेंड, सो मेनी फ्रेंड्स। सोशलाइजेशन रिक्वायर्ड, दैट वन, so that it will good to make friendship and your mind will be working always, you are thinking differently, good rapport you establish, कभी जरूरत पड़ेगा तो आपको मदद भी मिल सकता है वो आदमी से। तो साइकोसोशल चेंजेस रिक्वायर्ड इन अर्ली एडल्टहुड। अच्छा रैपो होने से आपको इंफॉर्मेटिव, दिस नाउडेज एवरीथिंग इज इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव दुनिया में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है, वो इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू टू गेट ए गुड जॉब, good rapport, good friendship, or good any other things also you will get out of friendship.
अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। एनीवे, साइकोसोशियल चेंजेस ड्यूरिंग adult early adulthood. Next, the family life cycle. Family life cycle means we are talking about. Anybody can tell what is family life cycle? फैमिली में एक्चुअली क्या है, फैमिली का एक लाइफ साइकिल, आप शादीशुदा कर लिए, उसके बाद आपका यू हैव ए फैमिली, और शादी भी नहीं किए, आप घर है, आपका पापा मम्मी सबको लोग है, भाई बहन सब लोग है, तो ग्रेजुअली यू आर ऑल्सो लर्निंग मेनी थिंग्स, एंड लाइफ साइकिल मतलब आपका चेंज भी होता है। अब सर मैरिज टू डेथ। हाँ, मैरिज टू, यू स्टार्ट योर, डेथ। हाँ, आप पढ़ाई किए, स्कूल स्टेज में रहे, फिर स्कूल स्टेज, कॉलेज स्टेज गए, कॉलेज स्टेज का बाद फिर सर मैरिज टू डेथ या बर्थ टू डेथ? बर्थ टू डेथ विल बी गुड, फैमिली लाइफ बर्थ टू डेथ यू कैन से, क्योंकि आप जब पैदा हो जाते हैं तब तो फैमिली आ जाता है ना, पापा मम्मी सब लोग आ जाते हैं, बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, फ्रॉम द एंड ऑफ योर लाइफ। हाँ, यू स्टार्ट योर, धीरे धीरे आप बड़े हो जाते हैं, फिर आपका भी सेपरेट फैमिली हो जाता है, लाइक न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। हाँ, न्यूक्लियर फैमिली जानते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे रह अलग से, वो ही न्यूक्लियर फैमिली हो गया। जॉइंट फैमिली मतलब आपका चाचा, आपका दादा, जो भी है सब लोग मिलके रहते हैं, मतलब 5 भाई है, 5 भाई मिलके रह रहे हैं, सबका फैमिली है साथ में, सो दैट इज जॉइंट फैमिली सिस्टम। आजकल तो और भी बड़ा फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली का बात भी हम लोग बोल रहे हैं, मगर कहाँ करते हैं प्रैक्टिकली, हम लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि गांव में कोई नहीं रहता है, सब शहर में आ जाते हैं, सबको पसंद होता है भुवनेश्वर में रहे, कटक में रहे, पुरी में, जहाँ ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल, ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर सोन, डेवलपमेंट जहाँ है अच्छा है, एटीएम है, आपका हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, हाँ, सिनेमा हॉल है, और कुछ जो भी चाहते हैं, मॉल है, मॉल घूमने के लिए, होटल है, हर टाइप का फैसिलिटी है, गुड रोड्स एंड गुड क्रिकेट ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, सब कुछ है, तो यू लाइक इट, जहाँ फेस्टिवल होता है, ये होता है, तो यू एंजॉय द लाइफ, एवरीबडी लाइक्स टू एंजॉय। तो फैमिली लाइफ साइकिल फ्रॉम बर्थ, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ टू एंड ऑफ द लाइफ, इट सीक्वेंस में चलता है, एक साइकिल की तरफ लाइफ साइकिल चलता है। दिस इज सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट फैमिली। अर्ली अडल्टहुड पीपल लिव ऑन देयर ओन, देन मैरी एंड बियर चिल्ड्रन। अपना फैमिली रहे, फिर मैरिज किए, मैरिज करने का फिर आपके साथ 1-2 बच्चे भी हो गए। इन मिडिल एज चिल्ड्रन लिव होम, पेरेंटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी डिमिनिशेस। मिडिल एज में क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट 40, अबव 40 टू 60-65 ईयर एज में। कभी कभी शादी करने के बाद नौकरी कर दिए, शादी कर ली, फिर आप बैंगलोर निकल गए कि दिल्ली निकल गए, वहां फैमिली के साथ रह रहे हैं, पापा मम्मी, आपका फैमिली, आपका न्यूक्लियर फैमिली हो गया वो। पेरेंटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी डिमिनिशेस, हाँ, पापा मम्मी भी कम हो गया, आप लोग निकल गए, responsibility diminishes, and people spend more time and money on themselves if they don't have to care for an elderly parent. लोगों के साथ बहुत पैसा जरूरत पड़ गया, तो मिडिल एज पीपल को कोई पूछता नहीं, फिर वो लोग घर में है, फाइनली रिटायरिंग, गेटिंग ओल्डर एंड लॉस ऑफ ए स्पाउस, इसका बीबी है, हस्बैंड है, जो भी है, निकल गए, डेथ हो गया। सो दीज आर द, and in family life cycle you see living home, joining family in marriage, marital role, transition period भी होता है, parenthood, जब बच्चे हो जाते हैं, आप पेरेंट हो गए, पेरेंटहुड भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, छोटे बच्चे, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो बढ़ाना है, बड़ा करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और सम ऑफ द लाइफ साइकिल्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, psychosocial changes during middle adulthood. मिडिल एडल्टहुड में साइकोसोशल चेंजेस क्या होता है,
Erickson stated that the primary psychosocial task of middle adulthood ages 45 to 65 years is to develop generativity, or you can say versus stagnation. Generativity का मतलब है the desire to expand one's influence and commitment to family, society and future generation. मिडिल एज का आदमी क्या सोचता है, वो कैसे उसका फैमिली एक्सपेंड होए, उसमें वो सारा सोसाइटी के लिए कुछ काम करे, वो फ्यूचर जनरेशन कैसे डेवलप होगी, बच्चे ही बड़े हो जाएंगे, वो नौकरी करेंगे, ये करेंगे, जो भी है. In between, there is another theory also, Levinson Sisson's life. Levinson actually is a psychologist who developed one theory. He believed that he is talking about adult development. His theory is adult development. As per Levinson, adults move through periods of stages and transitions. He says there are two seasons. One is transition, another is stability. Transition means the adult task is to terminate the existing life structure with forming a new structure. Transition, एक पीरियड खत्म हो गया, आपका अर्ली चाइल्डहुड खत्म हो गया, आप मिडिल चाइल्डहुड में घुस गए, मिडिल चाइल्डहुड खत्म हो गया, फिर there is a transition period and also you go to another period, old age. So like that it is continuing. One is transition, another is stability. He is talking about stability, and the period should maintain stable. Middle adulthood begins with transition 40 to 45. The structure is re-evaluated again 50 to 55 years and ends in culminating life structure, that is 55 to 60 years as per Levinson. Okay. Next is there are four developmental tasks. Which is very important so far as middle adulthood is concerned. So far as psychosocial changes during middle adulthood. What are the developmental tasks in middle childhood? So one is young, another is old. Young, old. Seeking new ways of being young and old, giving up some youthful qualities. Young, old के में से जो transition होता है, उसमें क्या होता है? People like to do something positive, meaningful changes. जो एज में जो होना चाहिए, ऐसे कुछ चीज करने के लिए कोशिश करते हैं. Young and old, finding a positive, meaningful changes. Second point is developmental task is destruction and creation. They reevaluate past hurtful acts. There may be attempts to apologize, more creative. ऐसे कुछ एक्ट किए हैं, उसको वो रीइवैल्यूएट करते हैं डिस्ट्रक्शन की वजह से, और क्रिएशन भी होता है. क्रिएशन क्या है? There may be attempts to apologize and more creative, they are doing something new. Third point is masculinity and femininity. This is very important. Masculinity, he is talking about masculinity and femininity. What is that? Middle-aged people must find a way to recognize and integrate masculine and feminine aspects of their personality. These are all talking about personality. Men become empathetic. आप देखिएगा एक मिडिल एज आ जाने के बाद 60 years old हो जाने के बाद people जो men स्पेशली जो आदमी लोग हैं, पुरुष लोग हैं, men become empathetic and caring. वो घर का काम करना चाहते हैं. They want to leave the job. जॉब को इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो अवॉइड जॉब. They are very empathetic and caring. जो मदर को मतलब वाइफ को करना चाहिए उनका, वो करते हैं हस्बैंड. और हस्बैंड जो वोमेन है, वोमेन बिकम ऑटोनोमस और फ्री हो जाना चाहते हैं. They are assertive, very positive, and interestingly they engage in some other activities.
वुमेन आर वेरी ऑटोनोमस, घूमना फिरना उनको अच्छा लगता है उस टाइम में, मंदिर जाना है, बाहर जाना है, पर मेन बिकम एम्पैथेटिक and caring. This is the third developmental task. Fourth one is engagement and separatedness. Engagement means middle-aged people are trying to find better engaged between with the outside activity. Outside activity में engage होना चाहते हैं. And men often pull back from occupation. नौकरी छोड़ के वो accomplishment जिसमें उनको सक्सेस मिलेगा, इसे कुछ काम करते हैं. Men are very busy in achievement, focusing on achievement. Women shift to their interest, family to job or community work. Women will be very interested to do job करना चाहते हैं. Job मतलब कुछ social work or community work they want. So like that there are 4 developmental tasks. Middle childhood and middle adulthood people are taking interest. Understood? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is about next no old age completed we have. No, old age not completed. This slide you have already gone through. This one completed, I think. Next is psychosocial changes during old age. The social world of older adults is varied. The social world of older adult is varied. Older adults place a high value on spending time with friends. Spending time with friends. जब उम्र हो जाता है 65 अबव, वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं फ्रेंड सर्कल में रहने. Many elder prefer not to interfere with, be a burden or be a burden to their extended family. Burden नहीं बनना चाहते. Evidence suggests that married persons tend to be happier in late adulthood than single person. जो मैरिज करते हैं उनको भविष्य में सुविधा होता है कि हस्बैंड वाइफ हेल्पिंग ईच अदर. मगर जो अकेला है, शादी नहीं करते हैं, सिंगल रहते हैं, उनको वेरी डिफिकल्ट होता है ओल्ड एज में. दे हैव टू, nobody is taking care of themselves. Next, those who have never married often cope the best with feelings of loneliness in late life. Loneliness में बिताना पड़ता है. So Erikson described in his theory that ego integrity versus despair is the final stage of life. Already we have discussed. This involves coming to terms with one's life. If there is a sense of integrity, people feel whole, complete, satisfied with their life choices and achievement. So as per Erikson, the last stage is ego integrity versus despair. Despair मतलब hate. People will hate you. Or integrity मतलब you develop the rapport with others. Maybe like there is a quotation, maybe same liking people will be get together. Same liking people, जिसका thoughts mentality match करता है, they will come together. They discuss with each other. So इस टाइप क्या होता है? This involves coming to terms with one's life. If there is a sense of integrity, people feel whole, complete, satisfied with their life choices and achievement. So this is about psychosocial changes during old age. Okay. Any question or anything about psychosocial changes during old age? Hello, Sujit? Yes, sir. No No, sir. problem. No, sir. No, sir. Next is challenges and issues in aging process. Challenges and issues. There are so many challenges, issues in aging process. As we become aged, our body change in many ways that affect the function of both individual cells and organ systems. As we become aged, our body change in many ways that affect the function of both individual cells and organ system. Weak हो जाता है आदमी, not capable enough to doing a task. सीढ़ी चढ़ना है तो दिक्कत हो जाती है,
बैठना, सोना, खाना, everything is a difficulty after 65. No, the rate of progress can vary differently for different persons. जो एक्सरसाइज करते हैं, जो रूटीन लाइफ मेंटेन करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, they will be happy. The aging process brings with many challenges. For instance, physically weak compared to the earlier years. Physically weak हो जाते हैं लोग earlier, पहले से. Facing different types of responsibility बढ़ जाता है. जमीन का काम है और कुछ काम है तो वो चिंता रहता है. एक लड़की है, उसको शादी नहीं कर नहीं पा रहे, कि कोई बेटा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, अभी तक है, कुछ नहीं कर रहा है. सो दिमाग में आ जाता है. ओल्ड एज में आदमी का थिंकिंग रहता है, हम तो बूढ़ा हो गया, हम क्या करेंगे, ये काम नहीं हुआ अभी तक. क्राइसिस, देयर आर डिफरेंट क्राइसिस ऑल्सो, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो. झगड़ा भी हो जाता है कभी कोई आदमी के साथ. इट इज for tackling the challenges, one must have varying coping ability, which itself a challenge. कोप करना भी, उसके साथ काम करना, जाना आना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना 70-80 years old का आदमी को डिफिकल्ट हो जाता है ओल्ड एज में. बट दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली adulthood, middle adulthood, as well as old age, late adulthood. We are talking about three जनरेशन. 3 जनरेशन है, 3 एज ग्रुप का बारे में हम लोग डिस्कशन कर. नेक्स्ट स्लाइड. एजिंग प्रोसेस. एजिंग इज ए प्रोसेस दैट accumulates changes in organism or objects over time. ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है. 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल. therefore we are talking about infancy, child school years, adolescent stage, early adulthood, middle adulthood, here old age or late adulthood. Therefore we are categorized. Change तो होता रहता है. Human beings aging process involves multi-dimensional changes on physical, psychological, cultural and social levels. Psychological changes क्या होता है? Anybody can tell? In old age, Maybe fear of living alone, fear of health और issues, health issues, diseases, और anything. अटेंशन क्राइसिस, उनको लगता है कि हमें कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, हमारा वो वैल्यू नहीं मिल रहा है. और कुछ साइकोलॉजिकल, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब भी होता है. डिप्रेशन हो जाता है. जितना ओल्ड एज जाएंगे, अकेला हो जाएंगे, रिटायरमेंट लोगों को आप स्टडी करिए, दे आर कन्फ्रंटिंग विथ नंबर ऑफ डिप्रेशन. बहुत चिंता रहता है उनका दिमाग. अकेला रहते रहते सोचते सोचते वो पागल टाइप का हो जाते, क्या करें क्या नहीं करें. सो इट इज referring to physical, psychological, cultural also, social level. एजिंग इज एन इनएविटेबल नेचुरल प्रोसेस. ऑटोमेटिकली एज हो जाएगा. इसको पूछता है क्या? टाइम ऑटोमेटिकली चलता है, एज हो जाता है. देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर एजिंग. एजिंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं है. Although it is true that women face much different challenges than men in aging process. वुमेन को ज्यादा प्रॉब्लम होता है इन कंपैरिजन टू मेन. घर में रहते हैं काफी टाइम, बाहर नहीं जा पाते हैं, ज्यादा लोग से इंटरेक्शन नहीं कर पाते, मे बी फिजिकल प्रॉब्लम बहुत होता है. डिफरेंट प्रॉब्लम्स विद वुमेन आल्सो. एक्सरसाइज होता है मगर एक्सरसाइज डिफरेंटली होता है. खाना बनाना है, ये करना है, वो सब घर का काम होता है, मगर अलग टाइप का एक्सरसाइज जैसे मेन बाहर जाके एक्सरसाइज करते हैं, इसे मौका कम मिलता है उनको, बिकॉज दे आर एंगेज्ड विथ होम रिस्पॉन्सिबिलिटी. बच्चे खाए कि नहीं, बच्चे गए कि नहीं, काम किए कि नहीं, वो कहाँ गया, आया नहीं अभी तक क्यों, दुनिया भर का चिंता उनका दिमाग में रहता है. मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड. मदर का बहुत काम है. Anyway, so aging from the male perspective is frequently associated with the loss and physical and mental function vitality. मेल में क्या होता है, वो भी होता है, फिजिकली वीक हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल होता है,
मेंटल फंक्शन भी काम नहीं करता है, काफी लोग, ज्यादा लोग मिलते नहीं बात करने के लिए, मेंटालिटी स्टडी करने के लिए, और दुनिया भर का समस्या रहता है आदमी के साथ, किसका कौन सा इशू रहता है, क्या प्रॉब्लम है, मे बी समबडी हैंडीकैप्ड, समबडी आई प्रॉब्लम है, और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो वो एनर्जी नहीं रहते, सुस्ते सुस्ते टेंशन हो जाता है आदमी के अंदर। So aging from the male perspective is frequently associated with loss of physical and mental function and vitality. Okay, next. Aging issues and challenges in early adulthood. Early adulthood is the stage of our life between the ages of 20 to 30 years. 20 से 40 साल के अंदर, who are very typically vibrant, active, healthy and focused on friendship, romance and childbearing, etc. वो सब चलता रहता है उनका। इंटीमेट इंटरेक्शन, रिलेशनशिप, अफेक्ट, अडेप्टेशन टू द चेंजिंग नीड्स। स्ट्रेस भी होता है, दैट इवॉल्व विथ एज, इच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। इसका मतलब हर स्टेज में, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड की ओल्ड एज आप कहिए, तीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहता है। इसमें आपका ग्रोइंग स्टेज है ये एक्चुअली। 20 to 40 years में we are growing in the career, growing in the business and growing your family life। घर बनाना है और कुछ करना है, आप ये चिंता कर रहे हैं, जॉब चेंज करना है, बच्चे को पढ़ाना है, नर्चरिंग द चिल्ड्रेन, शाम को सुबह स्कूल दे के छोड़ना है, ये करना है, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है 20 साल से 40। जनरली आजकल तो कोई शादी भी नहीं करता इतना आसानी से, तो 25-30 साल हो जाता है। 30 साल नहीं हुए तो अच्छा जॉब नहीं मिला तब तक कोई शादी भी नहीं करता। तो 30 to 40 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरज मैरिज होता है, हर चीज का डेवलपमेंट होता है, ये सब चीज। अगर 20 से 30 तक तो घुसता है एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अच्छा एम्प्लॉयमेंट सही जगह पे चाहिए। हाँ, आप लोगों में कितना लोग मैरिड है अभी? हाउ मेनी? हेलो, Sir, I am. you are married. How your age is? Hello. Your age? Hello. या हंसने का बात नहीं है, प्रैक्टिकल। हाँ, एज ग्रुप कौन सा एज ग्रुप है अभी? नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में। so married, when you married? Hello. How many? Hello. How many years back married or recently you married? Sir, I am 42 years old. You have two children also. Good. So you are under early adulthood पूरा। Yes, two children, one or two? हेलो, कितना चिल्ड्रन है, बच्चे कितना है? Sir, two children I have. अच्छा, इसके अलावा आप पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेट जॉब। फिर आर यू वर्किंग? Business woman. Sir, मैं business woman. Yes, बिजनेस sir. वुमेन। कहाँ पे रहते हैं, भुवनेश्वर ना कटक, कहाँ? Sir, Bhubaneswar में. गुड, वेरी गुड। so aging issues Sir, and I challenges. also 45 years. 45 years? Yes, sir. yeah. मानना पड़ेगा, आपका पढ़ाई का इंटरेस्ट है, इतना पढ़ रहे हैं, जानने के लिए तैयार। गुड, वेरी गुड। और जॉब भी कर रही हूँ एमकेसीजी में। कहाँ पे? एमकेसीजी में सर, साइकेट्री डिपार्टमेंट। ओके, साइकेट्री डिपार्टमेंट। साइकेट्री डिपार्टमेंट में? हाँ सर। कहाँ पे? एमकेसीजी मतलब बरहमपुर में? हाँ। ओ, अजय, व्हाट इज योर पोस्ट डेजिग्नेशन? मैंने वहाँ पे मैं क्लरिकल में हूँ अभी। क्लरिकल में? रजिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं। वेरी गुड। ठीक। Sir, I am 52 years old. 52? Yes, sir. How I have many? already done my PhD, but again I have a thought to have to go with PhD in MA. which subject? PhD in which subject? Education, sir. Education. Education. Good. बहुत बढ़िया। Next. Aging issues and challenges in middle adulthood. Middle adulthood refers to the people whom are
experiencing changes and development in their central lives. It is basically about the midlife transition or the period of life beyond young adulthood but before the commencement of old age. Physical changes occur in hair, teeth, face, skin, all types of physical changes. Ability to hear high pitched noises disappear. मिडिल एज में खत्म हो जाता है हाई पिच्ड नॉइजेस को सुनना ये करना. विजन ऑल्सो डिक्रीजेस. हेल्थ प्रॉब्लम्स आर एक्सपीरियंस्ड बाय द मिडिल एज पीपल इन men and women. So all types of physical changes occur during middle adulthood, and there are not only changes, there are difficulty also. Vision is poor, hearing problem is there, and all types of problem ग्रे हो गया हेयर, टीथ हो गया येलो, फेस में रिंकल आ गया, स्किन में भी ये आ गया पूरा. सो एवरीथिंग इज डिसअपियरिंग और वीक, बॉडी इज वीक, ग्रेजुअली वीक हो रहा है. नेक्स्ट, एजिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन लेट एडल्टहुड. as we get older we become physically less like our peers. older जितना हो जाते हैं फिजिकली हम लोग लेस लाइक होते हैं. हमारा फ्रेंड के सामने हम अलग लगते हैं, ज्यादा बूढ़ा लगते हैं. आप कोई जगह पे जा रहे हैं, यू आर फीलिंग डिफरेंट, इसलिए वी आर अप्लाइंग आर्टिफिशियल डाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो भी मेंटेन सर्जरी करके मेंटेन कर रहे बॉडी को. ह्यूमन बॉडी गोज थ्रू ए वेराइटी ऑफ चेंजेस as it gets older. In general, muscles, blood vessels and other tissues lost their elasticity, capacity loss करता है. The heart becomes less efficient, bones become weaker, changes occur in appearance, wrinkles, age spot, dry skin, obesity, vision, hearing loss, mental health and emotional well-being. Mental health क्या problem होता है late adulthood में? Anybody can share? Sir, memory loss. मेमोरी लॉस होता है. Therefore it is written अल्जाइमर डिजीज हो जाता है. सब. और क्या होता है मेंटल हेल्थ में? डिप्रेशन भी हो जाता है. डिप्रेशन इज ए नेचुरल कंडीशन ऑफ ओल्ड एज. अनदर बिगेस्ट लाइफ चेंजेस इज रिटायरमेंट. रिटायर जब हो जाता है आदमी, उसको दुनिया भर का टेंशन हो जाता है. बैठा रहता है, खाना पीना सोना हजम भी नहीं होता है, डाइजेशन भी प्रॉपर्ली होता नहीं. कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कितना बात किससे करेगा. सो कुछ देयर इज नो रूटीन लाइफ. अगर वो आदमी प्रॉपर्ली मेंटेन करता है होल डे इन डिफरेंट एक्टिविटीज, देन इट विल बी ओके. अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टास्क फॉर द पर्सन. क्या करना है, क्या नहीं करना है. So aging issues is a problem for late adulthood. कोई केयर करने के लिए है नहीं. बेटा बेटी जो भी है, वो बेटी शादी कर लिया, बेटा निकल गया कहाँ दूर में, बहुत दूर से नौकरी कर रहा है. इट इज ए प्रॉब्लम. डिप्रेशन हो जाता है. सुइसाइडल अटेम्प्ट्स भी कुछ लोग कर लेते हैं. अंडरस्टूड? हेलो? Yes, sir. Good. Yes, sir. There is only one slide. Next. This is the last, I think. Okay. So about aging issues and challenges, any question or anything? Anybody can tell? Challenges, changes. Somebody can review, मतलब just repeat it, whatever topics we have discussed. कोई है? Sujit, you are able to tell everything, please. Today's class only today's class. क्या क्या टॉपिक में हम लोग बात किए?
टॉपिक में इन द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, याद नहीं है? हाँ? कॉग्निटिव चेंजेस, Cognitive changes, हाँ. उसका पहले before Sir, that, physical changes. Physical Physical changes. फिजिकल Physical चेंजेस. हाँ हाँ. सर फिजिकल चेंजेस बोथ early adulthood, middle age and old age. Then Physical, cognitive and psychological changes. psychosocial changes, and also finally And challenges issues. in aging process. Yes. Yes, sir. Has to be discussed about early adulthood, middle adulthood, old age. What is that? Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Changes. Next is middle adulthood. Middle adulthood, physical changes in middle adulthood. Then old age. Old age में क्या physical changes हुआ फिर? Next is cognitive changes, early adulthood and middle age and old age. We discussed. Early adulthood in and middle cognitive changes during early adulthood. Next is middle adulthood and cognitive changes during middle adulthood. Cognitive changes, any doubt or anything? Any topic? Then is psychosocial changes, early adulthood, middle age, old age. Next is development during adult years. Social changes during early adulthood. Family life cycle. Psychosocial changes during middle adulthood. Psychosocial changes during old age. Challenges and issues in aging process. Next is Sir, first unit है physical changes. Early adulthood, middle adulthood, old age. First unit. Yes. Second unit, cognitive changes. Second unit is cognitive changes. Third unit is psychosocial changes. Fourth, challenges. Aging challenges and aging process. Issues with aging process. Aging means not only in early adulthood, it is continue up to old age. Suppose there are some small question, short question will be coming. What may be the short question you feel? Short question क्या आ सकता है? Suppose a small question may be aging issues and challenges in early adulthood. It may be a short question, it may be a long question also. लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, तो आपको सोच के करना है. ये नहीं कि उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स भी बहुत हो सकता है, उसको भी एग्जामिनेशन में आ सकता है. मे बी डिस्कशन के अंदर नहीं आया होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहा होगा. आपको यू हैव टू गो थ्रू द टोटल स्टडी मटेरियल. स्टडी मटेरियल है आप लोग के साथ? Yes, sir. Yes, sir. गुड. Yes, sir. Yes, sir. तो स्टडी मटेरियल को पूरा बिट बाय बिट पढ़ना है आपको, पूरा फर्स्ट पेज सेकंड पेज. ये एक ओवरलुक कर लिया हूँ टोटल ये को यूनिट्स को बिगिनिंग 4 ब्लॉक में. सो देयर आर मेनी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मेनी शॉर्ट क्वेश्चंस आल्सो. जैसे आपका कहा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है,
3 मार्क का 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, 15-20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड मे बी वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, one sentence में one sentence question may be asked. Suppose question may be asked, dash is the stage of our life between the ages of about 20 to 40 years. So you have to write early adulthood. 20 to 40 years में कौन सा एज ग्रुप, कौन सा ये आता है, मतलब एज ग्रुप, मतलब adulthood में कौन सा स्टेज आता है. You can write like that. सर Any question? सर एक्चुअली अगर आपने अभी जैसे बोला एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही शॉर्ट में आंसर दिया जा सकता है, बट वो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो उसको परफेक्टली कैसे फ्रेम किया जाए ताकि इट वुड बी गुड, वेरी वेल सूटेबल फॉर द जितना मार्क असाइंड हुआ है उतना मिल जाए एटलीस्ट. मे बी क्वेश्चन को चेंज करके वो दे सकता है. कॉग्निटिव चेंजेस और फिजिकल चेंज जो भी है, एक्सप्लेन कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग एडल्ट, अर्ली एडल्टहुड एंड मिडिल एडल्टहुड, दोनों मिला के दे. मे बी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिव चेंजेस बिटवीन अर्ली एडल्टहुड एंड मिडिल एडल्टहुड, उसमें क्या कॉग्निटिव चेंजेस अलग अलग होता है, वो भी आ सकता है. मे भी आ सकता है. डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिस्कस द साइकोसोशियल डेवलपमेंट स्टेजेस थ्योरी डेवलप्ड बाय एरिक्सन, वो भी आ सकता है क्वेश्चन है. सर कैन यू प्लीज रिपीट दिस वन? डिस्कस द साइकोसोशियल डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी डेवलप्ड बाय एरिक्सन. ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है. साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी डेवलप्ड बाय एरिक्सन, वो इम्पोर्टेंट है. इसे लास्ट क्लास हम लोग डिस्कशन किए थे. डिस्कस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डेवलप्ड बाय पियाजे. स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्कस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डेवलप्ड बाय पियाजे. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. आपको उसमें लिखना है सारा, जितना सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, 4 स्टेज को समझाना है. यू कैन राइट लाइक दैट. एंड ये इसके लिए कितना है, एरिक्सन का जो साइकोसोशियल स्टेजेस है वो 8 स्टेज, इट कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेजेस. 8 स्टेज को आपको, जिसे आपको बता रहा हूँ, आई रिपीट यू. 8 स्टेज है, जैसे कि एरिक्सन स्टेजेस. 8 स्टेज आपको याद होगा नहीं होगा. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड वन इज वर्सेस सेम एंड डाउट, थर्ड इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फोर्थ इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, फिफ्थ इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, सिक्स्थ इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 7 is generativity versus stagnation. Next is ego integrity versus despair. ये जो स्टेजेस है आपको ये में फोटो दिखाई, ठीक है, सो दैट यू कैन लर्न. थैंक यू सर. ये तो थोड़ा सा आइडिया भी आपको आ जाएगा. उसमें दिया है पॉजिटिव आउटकम्स, अप्रोक्सीमेट एज भी दिया है, नेगेटिव आउटकम्स भी दिया है. सो ये एरिक्सन का थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर इम्पोर्टेंट है, आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड. Another is important,
Piaget theory of cognitive development. Piaget theory of stages of cognitive development. That is, there are 4 stages like sensory motor stage, Pre-operational birth to 2 years, pre-operational stage 2 to 7 years, concrete operational, concrete operational stage formal 7 to operational. 12 years, formal operational stage 12 years to adulthood. So there are major characteristics also explained here. तो ये भी आपको मैं दे दूंगा. तो इसमें आपको फायदा होगा क्या? मे बी क्वेश्चन आस्क्ड, व्हाट इज cognitive development? What is cognitive development? Describe the Piaget theory of cognitive development. मैं आपको cognitive development क्या है बताना है, फिर what is Piagetian theory of cognitive development ये भी बताना है. So you can explain better way. कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, ये जो Piaget theory है उसमें आपको क्वेश्चन ऐसे आता है, short question. I am talking about some sensory. What is sensory motor stage? What is sensory motor stage? What is object permanence? What is egocentric thought? What is the principle of conservation? ये भी आ सकता है इसे. Exactly जो आपका एरिक्सन स्टेजेस में भी क्वेश्चन आ सकता है. What do you understand by trust versus mistrust? So far as Erikson theory of psychosocial development is concerned. पहले आ जाएगा identity versus role confusion. नहीं तो what is identity? You have to explain. Generativity versus stagnation stage. As per Erikson. Sir, please. क्या बोले? Sir, please discuss again about the psychosocial. What is psychosocial development? हाँ. Erikson का 8 स्टेज है इसमें, 8 stages. Sir, what is psychosocial development? Psychosocial development is talking about your what is the development emphasizes your identity, search for identity during adolescent years, or it encompasses how people's understanding of themselves, understanding of one another and the world around them changes during the course of development. Psychosocial development encompasses how people's understanding of themselves, one another, and the world around them changes during the course of development. Sir, please. Repeat. Psychosocial definition. You are writing. Yes, sir. You write. You can write. Psychosocial development by Erikson. You write down. Psychosocial development by Erikson. Encompasses or refers to, कुछ भी लिख सकते हैं आप. Encompasses or describes how people's understanding. How you are writing? Yes, sir. Yes, sir. How people's understanding of themselves. How people's understanding of themselves. How people's understanding of themselves. Comma देंगे one another. How people's understanding of themselves. Comma देंगे one another and the world. And the world around them, world around them changes during the course of development. During the course of development. During the course of development. During the course of development.
ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लास्ट को, एरिक्सन 1963, एरिक्सन 1963। एरिक्सन 1963। हो गया, लिख दिए? Yes, sir. Sir, psychosocial development by Erikson refers to how people's understanding of themselves, one another, and the world around them changes during the course of development. ब्रैकेट में एरिक्सन 1963 लिख दिए, वो अच्छा है, उसका कोटेशन है। सपोज आ रहा है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर स्टेज। ईगो इंटीग्रिटी, लिसन, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब घृणा, घृणा करिया। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इसको अगर आप एक सेंटेंस में लिख रहे हैं, वन सेंटेंस, शॉर्ट क्वेश्चन, सर कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, you can write also according to Erikson, comma देंगे। yes sir, a period from late adulthood, a period from late adulthood, a period from late adulthood, late adulthood, a period from late adulthood until death, until death, according to Erikson, a period from late adulthood until death. Somebody is talking, I think, disturbing. Until death, during which, until death, during, लिख रहे हैं? yes sir, yes sir, good. Yes, yes. According to Erikson, I repeat, according to Erikson, a from period of late adulthood until death, during which we review life's accomplishment, we review life's apostrophes, review life's apostrophes, accomplishment and failures. वन सेंटेंस क्वेश्चन, ये आंसर अच्छा होगा, आपको फुल yes sir, आंसर दे देंगे, फुल मार्क मिल सकता है इस लिखने से। सपोज अनदर क्वेश्चन में भी, व्हाट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज, you can write also yes sir, according to Erikson, according to Erikson, according to Erikson, a period during early adulthood, a period during early adulthood, that focuses on developing close relationship, that focuses on developing close relationship, that focuses on developing close relationship. that focusing on developing Sir, close it was relationship. about intimacy. Close relationship. Just a minute, another thing I am going to tell you.
What is fluid intelligence? You write fluid intelligence. What is intimacy versus isolation? Finish. Close relationship. Finish. Yes. Sir, Another it is question. only about intimacy. Yes. Sorry, you have said only about intimacy, but not isolation state. Acha. Versus Isolation you intimacy. require. Okay. Just a minute. You can write difficulties during this stage. Difficulties. You write difficulties during this stage. Difficulties during this stage. Result in difficulties during this stage result in feelings of loneliness. Difficulties during this stage result in feelings of loneliness and a fear of relationship with others. Fear of relationship with others. कॉमा देके फिर और थोड़ा उसको ये करना कॉमा देके while successful resolution of the crisis of this stage while successful resolution of the crisis of this stage of this stage results in this stage results in the possibility of forming relationship. While successful resolution of the crisis of this stage results in the possibility of forming relationship. That are intimate on a physical, intellectual and emotional level. That are intimate on a physical, intellectual and emotional level. Intellectual and emotional level. Another question you want to write? Fluid Yes. Fluid intelligence. What is fluid intelligence? Suppose a question will come. What is fluid intelligence? Fluid intelligence reflects. You write. Fluid intelligence reflects reasoning, memory, and information processing capabilities. Fluid intelligence reflects reasoning, memory, and information processing capabilities. In contrast, crystallized intelligence. In contrast, crystallized intelligence. Are you writing? Yes, sir. Okay. Yes, sir.
In contrast, crystallized intelligence is the information, comma देके skills and strategies, information, skills and strategies. Skills, strategies that people have learned through experience. People have learned through experience. People have learned through experience and they can apply. And they can apply. In problem solving situations. Problem solving situations. It is okay. So like that, many small questions you'll get from the topics. Many topics will be coming. Small question like that will coming. 1 mark question, crystallized intelligence, and another is fluid intelligence. ये तो और भी है बहुत. So you have to go through different study material as well as from Google also you'll get, or books if you have books you can know. So important is you have to go through the total material, then you will get all questions. Okay, क्योंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, 20 का आता है, 2 मार्क का भी आता है. So different types of question, objective, short question and long question. So you have to go through all types of questions and how to answer it. Not very difficult like that you answer. Single small question 1-2 mark का इसे आप आंसर दे देंगे तो पूरा full mark you will get. Sir, I think if you prepare, hello sir, I think if you prepare, if we prepare all the short type questions, then we will get the answer of long questions also. Okay, yes, why not? You need to prepare every day. You have to see जो भी faculty. Actually I have taken 4 classes. Today all classes completed. Okay. Yes sir, thank you. कल का और किसका होगा, maybe any other faculty. So whatever faculties are teaching, you note down and ask also questions. Accordingly you prepare yourself. That will be good. Sir? Yes. Sir, can you suggest some books on this topic, sir, apart from material, sir? बुक्स सजेशन में है ना, स्टडी मटेरियल का लास्ट में कुछ दिया है ना, बुक्स का नाम, वही बुक्स में हो जाएगा. आजकल तो ऑनलाइन में आपको यहाँ से मिल जाएगा, गूगल में सब मिल जाएगा, क्या जरूरत है. इग्नो मटेरियल भी अच्छा है, इग्नो ऑल्सो प्रोवाइडिंग गुड मटेरियल. इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो गूगल में आपको, मान लीजिए आप गूगल में भी सर्च करके बहुत चीज मिल सकता है, ऐसा बात नहीं है. ठीक है सर. ओके सर, थैंक यू. ज्यादा जाने का कोई जरूरत नहीं. अगर इट इज अवेलेबल, इट इज गुड. अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली गूगल में सर्च करके भी कोई भी डाउट है क्लियर हो सकते. बहुत ज्यादा होगा, कभी होगा, आप पूछ सकते हैं मुझे भी, ऐसा बात नहीं. ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you sir. I'm closing. Thank you.
Hello. Hello. Debasmita ma'am, can you send the question जो sir रखे थे?